Hi everyone, this is module number 61 for the subject of strategic human resource management. And in this module, we will talk about Wright and Boswell's 2002 typology of research on SHRM. Um, Fairly speaking, let me say that what we have talked in the previous modules about how SHRM emerged and what were the roots of SHRM, what were the antecedents of SHRM, what is the difference between the different terminologies of in the field of human resource management. So based on those all discussions, if you can see in the previous modules, one can think about how do we know or how we have gained all this knowledge. All that knowledge or everything what we have talked in the previous modules emerged as a research or as a continuous efforts by the researchers to understand what is a strategic human resource management. So in this module, we will talk about Wright and Boswell's 2002 typology of research on SHRM. Basically, Wright and Boswell's divided the different themes or different ideologies or different types of research, or in other words, they have categorized the different types of research. It helps us to understand what researchers have done, and it helps us to understand the future direction of research. Well, fairly speaking, this publication was made in 2002, and a lot of development in the field of strategic human resource management has done in the last 18 years, perhaps faster than what we knew until 2002. जैसे बिल्कुल एक पहले टेक्नोलॉजी होती थी, तो टेक्नोलॉजी बड़ी देर देर के बाद उसमें इनोवेशन आती थी। काफ़ी अरसा जो है वो एक ही चीज़ चलती रहती थी, जैसे एक ही मोबाइल है या एक ही तरह की ट्यूबलाइट जो है अगर आप घर में देखें, इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड एंड इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम जनरेशन इंटरनेट जनरेशन आई जिसको हम कहते हैं, अगर आप उससे नहीं है तो यू माइट हैव रियलाइज दैट कि पहले जैसे ट्यूबलाइट्स होती थी घर में, काफ़ी अरसे तक जो है वही मॉडल या वही डिज़ाइन या वही चीज़ें चलती रही, एंड देन द टेक्नोलॉजी डेवलप समथिंग और इनोवेटेड समथिंग न्यू आफ्टर सेवरल ईयर्स. While on the other hand, अगर आप देखें recently, so there are models and innovations. So innovations do not last for a longer time. 3G, 4G, new mobiles and everything. तो सिमिलरली जो 2002 तक की रिसर्च हुई है SHRM में, multiplied if you think about 10 times what has done after 2002. So according to this model, on the vertical axis or in this 2 by 2 matrix, you can see level of analysis, individual or the organization. Where on the horizontal axis, the label is multiple or single number of HRM practices. So if we look at the first quadrant, that is a strategic HRM, multiple HR practices and organizations. तो what does it mean? इसका क्या मतलब है या ये जो मॉड्यूल है हमें क्या बता रहा है? This is what we suggest, that the strategic HRM research on how HRM systems impact performance. ये एक kind of research है या एक direction of research है in which researchers focused on the impact of multiple HR practices on organization performance. So the unit of analysis or the level of analysis is organization, and the focus is the impact of multiple HR practices. So this is one type of research. तो बहुत सारी रिसर्च है that try to investigate or that try to examine कि जो मल्टीपल HR practices हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट है. Similarly, in the same quadrant, if we go down, you will see the individual unit of analysis is an individual, and the number of HRM practices multiple. We call them, let's say, psychological contract. तो एक ऐसी रिसर्च या एक ऐसी बंच ऑफ रिसर्च है या थीम है that try to investigate the impact of multiple strategic human resource management practices on individuals or the individual outcomes. For example, the psychological contract.
तो पहले में था कि मल्टीपल प्रैक्टिसेस का इम्पैक्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल की परफॉर्मेंस के ऊपर। दूसरी टाइप ऑफ रिसर्च है ये जो वो देख रही है कि मल्टीपल प्रैक्टिसेस का इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल आउटकम्स। और इंडिविजुअल आउटकम्स में अंटिल 2002 मैंने पहले कहा कि बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं था। तो उस वक्त जो है वन ऑफ द मोस्ट इमर्जेंट और मोस्ट डोमिनेटिंग कॉन्सेप्ट्स और वेरिएबल्स वर organizational citizenship behavior or the psychological contract or the psychological withdrawal, psychological distress, and so on, or employee commitment. So these were the dominating concepts, individual outcomes in the early 1980s. On the right side, you can see that the impact of single practice on organizations. तो ये क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन एचआर की बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं, तो हर प्रैक्टिस का आप इम्पैक्ट देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पे क्या है. The impact of single HR practice. For example, your reward and appraisal. This is a one practice. आप कहते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस इस तरह मैनेज करते हैं या परफॉर्मेंस अप्रेजल ऐसे होता है, साल में एक दफ़ा परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है. Now you see that how it is having an impact on organizational performance. तो similarly इसी तरह single practice and their impact on functional HRM, research on individual HRM function. कि इस प्रैक्टिस का एचआरए के फंक्शन के ऊपर क्या इम्पैक्ट है. एक्चुअली दिस 2x2 मैट्रिक्स इज गिविंग यू जस्ट अ ब्रीफ आइडिया अबाउट हाउ द रिसर्च कैन बी समराइज्ड एंड हाउ द डिफरेंट थीम्स ऑफ स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च कैन बी सीन और कैन बी अंडरस्टूड. तो एक तो यह है कि बहुत सारी प्रैक्टिसेस का मिल के ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, एचआर प्रैक्टिसेस का मिल के ऑर्गेनाइजेशन पे क्या असर है और इंडिविजुअल पे क्या असर है. और दूसरा यह है कि हर एक प्रैक्टिस का अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशन पे क्या असर है, इंडिविजुअल पे क्या असर है और इसी तरह एचआर के फंक्शंस पे क्या असर है. दीज आर द बॉसवेल्स एंड राइट एंड बॉसवेल्स 2002 typology of research on strategic human resource management.